मुझे बस कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं मतलब गाऊंगा भी तो मुझे रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि ये रहमान सर की कॉम्पोजिशन है। On Alia, honestly, it's the sweetest thing that she did. In fact, she had reached out on the day the song came. She said she really likes it, and then the next message came. You are outstanding in the song. Reddit is an interesting place. It used to be unpolluted. It used to be a place of like genuine critical feedback, but I feel like somewhere that is like been lost. Medium जो है ढूंढने का या love मिलने का या affection display करने का वो change हो गए हैं। लेकिन I think वो feeling अभी भी वही है। When you see him perform, it's his eyes that have so much honesty. You're feeling connected to this person. You're feeling the things he's feeling, and I think that's just the most incredible quality. Stars Express. रेडियो सिटी 91.1 से दिस इज मी पलक और आज इस कमरे की खूबसूरती जो इतनी बढ़ गई आई हैव सो टू गुड लुकिंग पीपल राइट हियर विद मी वन इज शर्वरी एंड वन इज ऑफ कोर्स वेदांग राणा। वेदांग जी पहले तो आप बता दीजिए कि क्या हम थोड़ी देर बैठ के आपको बस क्रश कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं? Yes. Yes, I guess. So modest of you. So modest of me. How many DMs are flooding? How many people are going crazy for you both? Tell me. Ladies first. Ladies take that first. You always do this to No, me. this You is my put best- me in like. How do I answer this? No, but there's a lot of love for our song Mascara, and I think that it's really heartwarming to see so many people actually make reels on it and also sing to it, which Yeah. which is really It's very nice lovely to because see. it's always exciting for you to kind of. I mean, we put a lot of love in the kind of things Yeah. we do, and then when people receive that love and they're open to receiving that love and they send us love back, I think it's the best feeling. Absolutely. मुझे तो लगा कि मस्कारा इसलिए because Sharvari is practically every brand's ambassador. Like you go to SV Road, Linking Road. Touch it, touch it, touch it, touch it. Every 5 minutes there's Sharvari. So we know you already because you are on all the bus stops everywhere. And kudos for that. Thank you. Vedant, for this movie, of course, it's very special for you because you got to sing with A.R. Rahman. So, because I do not have much time, तो please उस दिन के बारे में बताइए जब आपको रिकॉर्डिंग करने जाना था और ये गाना गाना था, क्या फीलिंग्स थी? Just take us through that. हाँ, it was मतलब it was crazy. I never thought कि ये मौका मुझे इस फिल्म में मिलेगा। हाँ. और मुझे बस कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं मतलब गाऊंगा भी तो मुझे रिजेक्ट किया जाएगा क्योंकि ये रहमान सर की कॉम्पोजिशन है। तो आप फाइनल नहीं थे मतलब? मेरे दिमाग में मैं फाइनल नहीं था। अच्छा। पता नहीं है मैंने कहानी खुद ही बना लिया नहीं बिकॉज आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हर कि मैं जब पहली बार रिकॉर्डिंग करने गया रहमान सर आई थिंक ही वाज ट्रैवलिंग इन दैट टाइम सो आई रिकॉर्डेड विद हीरल और मैं बस सोच रहा था कि अच्छा मैंने एक रिकॉर्डिंग करके वो हो गई रिकॉर्डिंग लेकिन दे विल स्टिल डिसाइड ऑन इफ आई एम द करेक्ट वॉइस। ओके। हाँ तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि ऑडिशन है और जब मैं पहले एक बार मैं स्टूडियो में गया एक वर्जन गाने का बना फिर लिरिक्स चेंज हो गए थे लेकिन वो वर्जन जब मैं सुनता था आई वाज लाइक कि नहीं ये किसी और सिंगर को लेके आ जाएंगे जो मुझसे बेहतर गाएगा विच मेक्स सेंस। तो या मतलब आई वाज वेरी नर्वस अबाउट इट बट आई वांटेड इट सो बैडली आई थिंक इसलिए आई वाज दैट नर्वस। Super. Talking about wanting it so badly, we have the queen of manifestation here. I think she can do some Get that a classes. lot. Yeah. I think you can do some classes. I heard Yeah. आप 50th birthday of शाहरुख खान पे मन्नत पे भी खड़ी थी, मैं crowd में थी। crowd में थी. And can you imagine that? Like, and उसके बाद आपने इम्तियाज अली के लिए जो वो पोस्ट डाला था when you saw him speak and cut to being in the film. What preparation you had to do be on the set कि भाई कोई भी गलती ना निकाले मेरे काम में कुछ भी. नहीं ऐसे नहीं था एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आसानी से नहीं आती है स्पेशली जब आप बहुत साल तक ऑडिशन करते हो। इन माई इनिशियल डेज आई रिमेंबर I was auditioning for more than like 5-6 years till I got my first show which was Forgotten Army, and then after that like some 7-8 years till I got Bunty Bubbly. So and I was assisting उस टाइम पे प्यार का पंचनामा। जी पर आई थिंक उस समय पे आपको पता होता है कि आप जितने ऑडिशंस जाते हो और जितनी बार आप रिजेक्ट होते हो द ओनली टेक अवे उससे ये होता है कि
जब काम मिले तब कोई आप में गलती ना निकाले, ये मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि एक्चुअली वो फर्स्ट फ्यू मौके आसानी से नहीं मिलते. वेदर इट इज इवन वर्किंग विद इम्तियाज सर, वेदर इट इज वर्किंग विद एनीबडी फॉर दैट मैटर, ये मौका आपको एक बार मिलता है, और अगर आपको वो दूसरी बार चाहिए होता है ना, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि जो भी हो, मैं डांस क्लासेस जाती थी, मैं एक्टिंग क्लासेस जाती थी, मैं असिस्ट कर रही थी, मैं सब कर रही थी, ताकि जब मेरा मौका आए तो ऐसा ना हो कि अच्छा इसे ये नहीं आता है, उसे वो नहीं आता. जैसे लैंग्वेज पे काम करना है, मैं पहले जब बात करती थी तो मेरे बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे कि अरे बट आपकी हिंदी में मराठी एक्सेंट है, तो मैंने डिक्शन क्लासेस करी ताकि मैं वो जो भी कमी हो वो उसे बेहतर कर पाऊँ. तो आई गेस इसमें you got some Punjabi accent? इसमें एक्चुअली because it is the story of obviously undivided India, so there are lots of languages, so I think Hindustani would be the language that we kind of went with. और उसमें I think ये भी था कि सर हमें ये बता रहे थे कि उस टाइम पे सारे टीचर्स ब्रिटिश होते थे, तो हमारी इंग्लिश काफ़ी साफ है इस फिल्म में, बिकॉज वो लोग पढ़े लिखे थे और उन्हें इंग्लिश प्रॉपरली आती थी. तो हमारी तो एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बट ऑफकोर्स टू बी इन दैट वर्ल्ड थोड़े बहुत ऑब्वियसली लैंग्वेज को लेके हमने काम किया है, एंड होपफुली पीपल विल सी इट. You also went to Punjab to study the character और आपने टर्बन बनाना भी सीखा, तो कैसा रहा पूरा पंजाबीनेस लेना अंदर? ये एक्सपीरियंस मेरा जो पहली बार हुआ पंजाब का, वो शर्वरी के साथ था. हम रेकी पे गए थे. अच्छा, which city? We had gone to First we went to Amritsar, then we travelled a lot. हम चूरल गए. चूरल, बस्सी पठाना पे गए, मलेरकोटला गए, I think पटियाला and चंडीगढ़ एंड में गए, and then we took the flight off. But did you have पटियाला की लस्सी, अमृतसर के छोले कुलचे? अमृतसर के छोले. You just name it, we eaten it. You just start naming, or should we start naming it? Yeah, you name it, we've eaten it. पेड़ा लस्सी. We've done everything. Everything. Really, Which was like top पे जो डिश के सपने अभी भी आते हैं. Oh, छोले कुलचे I think. छोले कुलचे. And I'll tell you which one. हम एक्चुअली रेकी पर गए थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कहा था, पर एक छोटा सा ठेला था जहाँ पे वो बना रहे थे स्टफ्ड कुलचा पराठा टाइप, और उसमें नहीं जो जिया का घर था, हाँ, वहाँ पे बाहर एक ठेला था, और वहाँ पे उसमें ना पनीर, आलू, छोले सब मिक्स करके, इट वाज लाइक कुलचा ही था, वो ऐसे बर्गर टाइप लग रहा था, पर वो कुलचा था, वो वाज लाइक अ कुलचा फिल्ड विद ऑल दीस थिंग्स. करेक्ट, वो आई रिमेंबर. दैट वाज टू गुड. You know, we all love Mumbai, but one thing you have to say कि खाना तो नॉर्थ का. Even I agree. मतलब मैं भी I don't want to get into that argument, लेकिन बट मुझे सब जगह का खाना पसंद है, so it's fine. आलिया भट्ट ऑल्सो, जैसा आई एम श्योर एवरीबडी विल आस्क, तो मैं भी पूछ ही लेती हूँ, क्या ही जाता है कि आलिया भट्ट ऑल्सो पोस्टेड द मस्कारा लगाते हुए. सो हाउ इज योर इक्वेशन विद हर? ऑफ कोर्स रेडिट तो इतना ज़्यादा नेगेटिव मतलब चीज़ें बताता है दैट यू ऑलवेज फील कि ओ माई गॉड ये सच है, बट रियलिटी में तो कुछ और ही है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेडिट कल्चर जो चल रहा है? You know, to be fair, I genuinely don't open Reddit and I don't read it also. But वो आ जाता है because Instagram वो न्यूज़ पिक करेगा, ये वो करके मे बी किसी बंदे ने ऐसे सोचे समझे बिना सोचे समझे लिख दिया, but then it becomes a like full blown news and you are real people. Yeah. And no, but to be honest, I actually don't have a habit of reading anything. Like I genuinely don't. Comment section never? No, maybe like if like अगर ट्रेलर टीजर कुछ डाला है, आप उस पे जाओ तो शायद उस पे मैंने देखे हैं, या यूट्यूब पे मैंने देखे हैं एक्चुअली लोगों के रिएक्शंस, जस्ट टू सी कि उनको ट्रेलर या टीजर या गाने के बारे में क्या लगा. बट टू बी फेयर, आई डोंट रीड एनी ऑफ दिस, बिकॉज आपको अपनी सच्चाई पता होती है, उससे ज़्यादा फिर आपको क्यों ही, मतलब आई डोंट लाइक टू इन्वाइट दिस मच एनर्जी. बट टू बी फेयर, I really think that I have really gotten a lot of positivity from everything that I have read so far. Yeah. I do feel that there are lots of people out there who speak very well for me and wish very well for me, and I feel like I would want to concentrate only on that bit. But on Alia, honestly, it's the sweetest thing that she did. Yeah. It's the sweetest. You had no clue she was doing it? I had no clue. I had no clue. In fact, she had reached out on the day the song came. She said she really likes it. Then a few days later, I got a message which said, "Forgot to tell you." And I'm thinking, oh my god, what happened? And then the next message came, "You are outstanding in the song." And I was like, Alia just writes randomly. She just spoke to me about the song because she commented on it, and then she sent me this, which was too sweet.
And then she made this video. Yeah. So in the cons. yeah, and it was really sweet. I'm sure she had a really busy schedule Yeah. and she had so much on her plate. But to take like those 5 minutes, 10 minutes and make that video and put it out just shows how much love she has for everybody. And she's a big cheerleader, you know. She Yeah, really, she's the really biggest wishes cheerleader. well for people. And that I feel is like her biggest strength. It's her best quality, Yeah. and she really does it out of like Yeah. you know Goodwill. good like a heart. You know, Heart. she's just that kind of a person, and it was such a cute video, and even Yeah. the message that she put was Yeah. so. And also, so it charming. actually puts us also at ease. Ki jo, as I said, that Reddit is so much full of negativity and all that, and we really like these people because we actually meet you guys and we know that what kind of people you are, Alia is, and then we read all this, we also feel bad. Why is this narrative This being put Reddit out there? thing is quite a thing. I feel. Do you I mean, indulge in any of Redditing? I come across things. Hmm. I'm not gonna say that I don't come across things, but yeah, Reddit is an interesting place. I feel like I used to like it because you know it was it used to be unpolluted. Acha. It used to be a place of like genuine, you know, critical feedback, but I feel like somewhere that is like been lost. That is my 2 cents on it. I feel like at some point there used to be only like a few people there and they used to have genuine good, you know, criticism to give, and I really enjoy critical feedback, and be it negative, but at least it's critical and it's not hateful. Now Who's I think giving it's, you a negative feedback with these looks? Nobody is, Vedant. Just chill. I get so shy. I Oh don't my know. gosh, this is the best thing. Even Shah Rukh Khan की आप अभी भी तारीफ करो, he will just blush like crazy. Shah Rukh Khan, after so many years, he will blush like crazy if you say 2 nice things about him. So good, अच्छे आप उसमें हैं, श्रेणी में. But I want to know love of 2026 जो आजकल है versus love of 1947, and of course I want to talk about Partition. While doing it, आपका दिल कितनी बार टूटा? Because ट्रेलर देके वो देखे, और मेरी अपनी नानी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं, because from north हर एक घर में कहानी है. अशोक नगर करके तो कॉलोनी है पूरी, वहीं से आई थी. तो रियल किस्से हैं इसमें, रियल इंस्टेंसेस हैं. हाउ डिड यू गो अबाउट द पार्टीशन थिंग? I think so. Of course, kahani fictional hai, but is inspired from Many- true events many and true stories. Many stories which Imtiaz sir heard when he was shooting in Punjab before. Chamkila And ke time. I think so. I don't know. Yeah, उससे किस पहले, time, yeah, but I think- that's what he said in his interviews when we were sitting with him. मतलब कुछ देर पहले. But of course, I think कि you know this is something Imtiaz sir said, so I'm actually just repeating it. It's not my thing, but I really connected to what he said, so I'm going to say it, that in all these stories, people really remember things that were things like their small things, like their dolls or their something like a tree or the flowers on the tree, and and the thing is that there's a lot of love in what they're holding also, like I know that there was so much that happened, and there is so much respect for the event that happened and everything that happened, but all these people still have so much love in their heart in spite Yeah. of everything. Yeah. So I think our film actually talks about, yes, the backdrop is, yes, the event is of the partition, but I think the core is love. The core is finding your way back, and there's always something positive in मेरी तो everything. नानी कहती थी कि वहाँ पे हम लोग दिए छोड़ के आए थे, और कैसे कहते हैं कि वहाँ की फैमिलीज ने उनके दिए चलाए और यहाँ की फैमिलीज जो दिए छोड़ के गई थी उनकी फैमिलीज चलाती थी. एंड आई लिटरली गेट गूज बम्स थिंकिंग अबाउट, अगर आपको ही आज बोल दें कि सब कुछ छोड़ के चलो, Yeah. हाउ. और ऐसी कितनी कहानियां हैं, and it's not just we're talking about Punjab right now, but this is quite a universal feeling. Yeah. और And what's happening in the world right now is kind of like that. It's taking us back there. yeah. Love in this generation versus love that time जो इसमें दिखाया है, like जो दिलजीत लेके आ रहे हैं, how difficult do you think is आज की generation में love ढूंढना? Because it's a swipe left, swipe right generation, and all my friends are finding it very difficult to find love. So what's your take on that? I think medium जो है ढूंढने का या love मिलने का या affection display करने का, वो change हो गए हैं, लेकिन I think वो feeling अभी भी वही है. I तो believe that. Even because it's about everything around that has changed. अभी मोबाइल फोन है, एप्स हैं, जैसे आप कह रहे हो, इंस्टाग्राम है, लोगों को मिलना आसान हो गया. सो आई थिंक ओनली दैट इज चेंज, बट दैट फीलिंग, दैट रियल फीलिंग ऑफ ट्रू लव, आई थिंक मेरे हिसाब से तो सेम ही है. Is Diljit playing a radio jockey in this by any chance?
So I won't tell you too much. So I technically think I shouldn't answer this question. Because we are from radio, that's why we were very excited to ask. Radio jockey, I think नहीं radio jockey तो नहीं है. Radio jockey तो नहीं है. Anything more? How was working with Diljit? Just quickly. Because interview would be incomplete if we don't talk about No, of Diljit. course. I mean, we didn't get so much time to interact with Diljit sir because हमारे बहुत कम scene, I mean, थे ही नहीं actually scenes, sorry. But briefly एक दिन हमारा scene था. But the one thing that stays with us always is just the person that he is, and also when you see him perform, it's his eyes that have so much honesty. You know, कि उनकी आंखों में कुछ दिखता है जो you feel something, you know, like you look into his eyes and you're feeling connected to this person, you're feeling the things he's feeling, and I think that's just the most incredible quality. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी